let's see 4.2.1 sources and the fields. Okay, we know that charge produce a electric field in a space around it. So over here, if we are considering a source charge capital Q, okay, it is a source charge, means it is known as a source of electric field. That's why over here we are using a word source charge. Okay, it produces the electric field. E is equal to kq by r square into r cube, where r is a distance at which electric field is to be determined. Okay, so r distance पे electric field कितना होता है, kq by r square into r cube, where what is r cube? R cube is a unit vector. Okay, unit vector along the vector r, and E is the vector field, means electric field is a vector quantity. That's why over here we can say E is a vector field. Okay, now if any other charge of small q, okay, is placed in the electric field of source charge capital Q, then what happens? Force acting on it, yes or no? कितना फोर्स लगेगा? F is equal to Q into E जितना. ओके, हमने चैप्टर नंबर 1 में पहले ये देख लिया. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं, तो फोर्स कितना हो गया? Q by r square into r cap. ओके, तो ये इक्वेशन के ऊपर से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन अ लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट इन अ स्पेस. कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे स्पेस में, उसके ऊपर डिपेंड करता है. आप देख सकते हो डिनोमीटर में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, जितना डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है. तो मैं यहाँ से ऐसे भी बोल सकता हूँ कि as it depends on a location of a point in a space, it also varies with a location, or you can say also varies with a distance. जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, सो मैक्सवेल, ओके, who unified the electric field and magnetic field, who said that electric field and magnetic field are combined concept. Okay, that electromagnetic waves is a combination of electric field and magnetic field, जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे. So Maxwell unified the electric field and magnetic field, said that this electric field does not only depends on a location of a point in a space, it does not varies only with a location, or you can say only with distance, it also varies with time. वो टाइम के साथ भी वेरी होता है. ठीक है, but in this chapter we assume that fields means electric field and magnetic field both are do not changes with time. Okay, यहाँ पे ये पूरे चैप्टर के थ्रू आउट हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है. इट डज नॉट वेरीज विथ टाइम. ओके, नेक्स्ट, as static charges, or you can say stationary charges produces electric field around it, same as moving charges produces magnetic field. Okay, so there is some, or you can say some or many properties of magnetic field which is identical to what? Electric field. Okay, first one is the electric field is a vector field. Okay, same as magnetic field is also vector field. Okay, it is denoted by B. Okay, over here B R indicates the magnetic field at distance r. Okay, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? When more than two charges are present in a system, electric field at any point is sum, or you can say vector sum of electric field due to all the individual charges. Okay, so we can say for more than one charges field at any point acts vectorly. Okay, तो magnetic field के लिए क्या होगा? Okay, so we can say magnetic field due to several charges, or you can several sources. Charges is a source of electric field. Okay, and flow of charges is a source of magnetic field. So over here magnetic field of several sources means several moving charges. Okay, at any point is vector addition of magnetic field due to all these individual sources. Okay, मतलब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल यहाँ पे ये थियरी में आगे हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज आएंगे. कैरेक्टरिस्टिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है. ठीक है.